who is credited as the father of computer? କୁହନ୍ତୁ who is credited as the father of computer? computer ର father କିଏ ଅଟନ୍ତି? which option is your right answer? option A is your right answer. Charles Babbage. Charles Babbage होउचंती कंप्यूटर रो जनक. जेउ दिन ठारू चार्ल्स बाबेज डिफरेंस इंजिन और जाहु कहा जाउचे एनालिटिकल इंजिन को से डेवलप कले से दिन ठारू चार्ल्स बाबेज को कंप्यूटर रो जनक कहा जाय. नेक्स्ट क्वेश्चन दिबा क्वेश्चन नंबर 2. Which of the following is an example of first generation computer? ट्राई करियो. Which of the following is an example of first generation रो कंप्यूटर अटे? फर्स्ट जनरेशन रो कंप्यूटर होचे इनाक. ऑप्शन ए हो जिवो राइट आंसर. इनाक हिजो आपनकर गोटे फर्स्ट जनरेशन रो कंप्यूटर रो एग्जांपल. नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड द सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर रे केउ टेक्नोलॉजी को यूज करा जाउथला? सेकंड जनरेशन कंप्यूटर रे ट्रांजिस्टर्स को यूज करा जाउथला. ट्रांजिस्टर्स माने रखंतु फर्स्ट जनरेशन रे वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर रे ट्रांजिस्टर्स को यूज करा गला. ओके एवं आईसी तो आपनकर थर्ड जनरेशन को आरंभ होला. ऑप्शन बी हबो यार राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा क्वेश्चन नंबर 4. व्हिच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस्ड इंटीग्रेटेड सर्किट्स? आसिला प्रश्न ऑलरेडी म आंसर करि सारिछि. कोन हिजो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बेले को आपनकर आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट को यूज करा गला. ऑप्शन सी हबो यार राइट आंसर. समस्त चूज करछंती. नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा क्वेश्चन नंबर 5. देखंतु क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर? फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर रो प्राइमरी कंपोनेंट कोन अटे? इट मींस फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर रे कोन यूज करा जाउथला? माइक्रो प्रोसेसर्स. ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर. मन रखंतु माइक्रो प्रोसेसर्स को फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर रे यूज करा जाउथिला. नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा क्वेश्चन नंबर 6. Which of the following is a characteristics of fifth generation of computer? Which of the following is a characteristics of fifth generation of computer? Try करिबा क्वेश्चन नंबर 6. फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर रे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रो यूज हुए. ठीक अछि. तो करेंटली जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर चली छै आपनकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रो एआई यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो यार राइट आंसर. फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रो कंप्यूटर को जाय. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करिबा. हु डेवलप्ड द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर मार्क 1? ओके मार्क 1 को के डेवलप करथिले? क्वेश्चन नंबर 7. मार्क 1 को के डेवलप करथिले? ऑप्शन बी हावर्ड आइकेन. हावर्ड आइकेन या को डेवलप करथिले. ऑप्शन बी समस्त चूज करछंती. ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. What was the primary use of abacus in ancient times? abacus रो मुख्य व्यवहार कोन कोंतु? abacus कंप्यूटर रो मुख्य व्यवहार कोन हे परिबो? that is mainly used for कोन? एटा होची गोटे एज ए मैकेनिकल डिवाइस और कैलकुलेशंस पय यूज करा जाउतला abacus को. abacus होची एक मैकेनिकल डिवाइस एवं याको कैलकुलेशन पय यूज करा जाउथिला. बुझियला. नेक्स्ट जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करिबा. Which of the following is not a type of computer generation? देखो फर्स्ट जनरेशन अच्छी, सेकेंड अच्छी, थर्ड अच्छी, फोर्थ अच्छी एंड फिफ्थ अच्छी, बट सिक्स्थ जनरेशन रो कंप्यूटर नाही. ओके वर्तमान जो जनरेशन चली दैट इज कहा जाउची फिफ्थ जनरेशन एआई. एआई रो जुग कहा जाउची आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो सिक्स्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हेबो नाही. ऑप्शन डी हो जबो यार राइट आंसर. इजी क्वेश्चंस थिला. नेक्स्ट जिबा क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट इज द टर्म फॉर द चेंज इन टेक्नोलॉजी यूज्ड इन कंप्यूटर? कोंतु व्हाट इज द टर्म केउ टर्म को यूज करा जाउची जते बेले टेक्नोलॉजी क्षेत्र रे चेंज आसे? दैट इज कोन कह दिबो? जनरेशन को दिबो. ऑप्शन बी जनरेशन इज योर राइट आंसर. जनरेशन टर्म को यूज करा जाय. गॉट इट. ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. व्हिच लैंग्वेज इज एसोसिएटेड विथ द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? व्हिच लैंग्वेज इज एसोसिएटेड विथ द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर? इट मींस थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बेले को हाई लेवल लैंग्वेज रो यूज पॉसिबल हे परतला. ऑप्शन सी हाई लेवल लैंग्वेज इज आपन राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. व्हाट इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन? VLSI रो फुल फॉर्म हेउची वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन. प्रश्न कहूची VLSI रो
प्राइमरी कंपोनेंट कौन हो कहतु व्हाट इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन रो प्राइमरी कंपोनेंट होची माइक्रो प्रोसेसर ऑप्शन डी हो जबो यार राइट आंसर बुझियला माइक्रो प्रोसेसर समस्त चूज करछन माइक्रो प्रोसेसर नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा क्वेश्चन नंबर 13 ट्राई करंतु क्वेश्चन नंबर 13 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मिनी कंप्यूटर निम्नलिखित मध्यरु केउटा एक मिनी कंप्यूटर रो एग्जांपल अटे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मिनी कंप्यूटर ऑप्शन सी हो जबो राइट आंसर PDP 8 हो जेको मिनी कंप्यूटर ओके ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर नेक्स्ट व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ CPU रो प्राइमरी फंक्शन कोन होबो कोन CPU रो प्राइमरी फंक्शन होची टू प्रोसेस डाटा को प्रोसेस करेबा होची CPU रो प्राइमरी फंक्शन डाटा को प्रोसेस करेबा होची CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट रो प्राइमरी फंक्शन नेक्स्ट व्हिच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स शो द इंट्रोडक्शन ऑफ पर्सनल कंप्यूटर केउ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बेल को पीसी आपनकर जहा कहै पर्सनल कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस करा गला पर्सनल कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस करा दितला फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बेल ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 व्हाट डज CPU स्टैंड्स फॉर CPU रो फुल फॉर्म कोन होबो कोन CPU रो फुल फॉर्म कोन हे जिवो क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हेउचे CPU रो फुल फॉर्म नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज अनुसार निम्नलिखित मध्यरु केउटा एक कंप्यूटर रो टाइप हबो नै देखंतु मेन फ्रेम मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर हे परिबो साइज अनुसार बट नानो कंप्यूटर रो साइज अनुसार यार कैटेगरी रे आसीबो नाही तो ऑप्शन डी योर राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 ट्राई करंतु व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सुपर कंप्यूटर व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सुपर कंप्यूटर कोन हिजबो क्वेश्चन नंबर 18 हाई प्रोसेसिंग स्पीड रही सुपर कंप्यूटर रो हाई प्रोसेसिंग स्पीड रही जेमिति आपनकर सुपर कंप्यूटर रो गोटे एग्जांपल कोन प्रत्युष हे परिबो कि प्रत्युष हेउची गोटे सुपर कंप्यूटर रो एग्जांपल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 हु इज नोन एज द फर्स्ट प्रोग्रामर प्रथम प्रोग्रामर के थिले कंप्यूटर प्रथम प्रोग्रामर के थिले कहंतु ऑप्शन बी आडा लव लेक इज योर राइट आंसर ओके ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर आडा लव लेक नेक्स्ट दिबा क्वेश्चन नंबर 20 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज निम्नलिखित मध्यरु केउटा एक हाई लेवल रो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अटे C++ ऑप्शन डी हो जिवो हेर राइट आंसर C++ होचे एक हाई लेवल रो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्वेश्चन नंबर 21 व्हाट डज VLSI स्टैंड्स फॉर VLSI रो फुल फॉर्म कोन हबो कोंतु VLSI रो फुल फॉर्म कोन हिजबो क्वेश्चन नंबर 21 VLSI रो फुल फॉर्म होची वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माने रखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 व्हिच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI को यूज करा जाउतला फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर करंट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हम कहि परिया फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए कंपाइलर बट कंपाइलर रो प्राइमरी फंक्शन कोन हबो कोन गोटे कंपाइलर माने दैट इज गोटे ट्रांसलेट करिवो हाई लेवल कोड को मशीन कोड रे मन रखंतु ऑप्शन ए हबो राइट आंसर ट्रांसलेट करिवो हाई लेवल कोड को मशीन कोड रे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कंप्यूटर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पर्पस अनुसार दैट इज आपण जनरल पर्पस रो कंप्यूटर देखिबे स्पेशल पर्पस रो रहिछि एंड हाइब्रिड कंप्यूटर आल्सो रहिछि बट क्वांटम कंप्यूटर यार कैटेगरी रे आसीबो नाही तो ऑप्शन डी हो जिवो हेर राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 व्हाट डज ULSI स्टैंड्स फॉर कोन हबो कोंतु ULSI रो फुल फॉर्म कोन हिजबो ULSI रो फुल फॉर्म कोन हिजबो क्वेश्चन नंबर 25 ऑप्शन ए अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जहां आपनकर AI फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर रे यूज होय दैट इज टेक्नोलॉजी ULSI क्लियर कंप्यूटर रो हिस्ट्री क्लासिफिकेशन रो एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर रो आपनकर प्रश्न थिला 25 नेक्स्ट जिबा हम कंप्यूटर रो आर्किटेक्चर रो 25 क्वेश्चंस डिस्कशन कर ओके फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज कंप्यूटर आर्किटेक्चर ट्राई करबा व्हाट इज कंप्यूटर रो आर्किटेक्चर कोन कोन आर्किटेक्चर माने कोन कंप्यूटर रो गठन ठीक अछि आर्किटेक्चर माने कंप्यूटर रो गठनटा केमिति दैट इज हम कहि परिबा ऑप्शन ए होइज राइट आंसर सेट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स दैट स्पेसिफाई करूची द फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन एंड हेयर execution means implementation of the computer system option a होइजबो हेयर राइट आंसर
Next question number 2. Which of the following is a type of computer architecture? Which of the following is a type of computer architecture? देखो कंप्यूटर रो आपनकर von Neumann architecture रही हार्वर्ड आर्किटेक्चर रही इंस्ट्रक्शन रो सेट को लेकी मध्ये आर्किटेक्चर रही मींस all of the above हबो यार राइट आंसर ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर all of the above माने रखंतु नेक्स्ट जिबा क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करिबा what does the control unit generate to controls other unit which option is the right answer बट कंट्रोल यूनिट कोन जनरेट करूची अदर यूनिट को कंट्रोल करिवा पय क्वेश्चन नंबर 3 कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करूची ऑप्शन सी होइज द राइट आंसर मन रखंतु कंट्रोल यूनिट कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करिवो टू कंट्रोल अदर यूनिट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करिबा व्हिच ऑपरेशन डज ए सीपीयू परफॉर्म सीपीयू द्वारा क्यों ऑपरेशन टी हुए अरिथमेटिक ऑपरेशन तो हेउची सीपीयू द्वारा डाटा को ट्रांसफर करिया मध्ये काम कोन प्रोसेस करैबो सीपीयू लॉजिक ऑपरेशन तो ऑप्शन डी व्हिच द राइट आंसर ऑल ऑफ दीज इज योर राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए कंपाइलर बट कंपाइलर रो प्राइमरी फंक्शन कोन रिपीट अछि क्वेश्चन टू ट्रांसलेट करिवो कंपाइलर माने मन रखु ट्रांसलेट हाई लेवल कोड इनटू मशीन कोड ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 which of the following is used to speed up computer processing आपण कंप्यूटर रो प्रोसेसिंग को स्पीड अप करिया पई चाहंती सेति में आपण कोन करि परिबे आपनकर जो कोन अछि दैट इज कैशे मेमोरी को यूज करंतु बिकॉज़ कैशे मेमोरी बहुत फास्टर अटे ठीक अछि आपण कैशे मेमोरी को यूज करि परिबे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करिवा व्हाट डज SIMD स्टैंड फॉर इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर SIMD रो फुल फॉर्म कोन हेबो कहबा कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्षेत्र रे SIMD रो फुल फॉर्म कोन हिजबो दैट इज सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा हिजबो यार राइट आंसर क्लियर नेक्स्ट जिबा क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करिवा व्हाट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ von Neumann आर्किटेक्चर von Neumann आर्किटेक्चर रो निम्नलिखित मध्यरु केउटा एक कंपोनेंट हबो नाही von Neumann आर्किटेक्चर रे आपण कैसे मेमोरी देखिबा पई पाइबे नाही ऑप्शन डी हबो यार राइट आंसर ठीक अछि von Neumann आर्किटेक्चर रे आपण कैसे मेमोरी देखिबा पई पाइबे नाही नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करिवा व्हाट इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ ए माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम गोटे माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम रो प्राइमरी कंपोनेंट कोन हे परिबो गोटे माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम रहिछ तार प्राइमरी कंप्यूटर कोन हे परिबो सेते मेमोरी भी रहिबो पेरिफेरल्स इक्विपमेंट रहिबो इनपुट आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइस माइक्रो प्रोसेसर आल्सो रहिबो ऑप्शन all of these is your right answer which format is used to store data को store करिया पई केउ फॉर्मेट को यूज करा जाय डाटा को स्टोर करिवा पई दैट इज आपनकर BCD फॉर्मेट यूज करा जाय बाइनरी कोन करछि बाइनरी डेसिमल ठीक अछि BCD फॉर्मेट को यूज करा जाय नेक्स्ट जिबा क्वेश्चन नंबर 11 what is the fastest type of computer memory what is the fastest type of computer memory which option is the right answer register बहुत fast है ऑप्शन अनुसार register is the right answer next question number 12 which operation is not performed by the ALU arithmetic logic unit द्वारा केउ ऑपरेशन को परफॉर्म करा जाई परिबो नाही केउ ऑपरेशन को क्वेश्चन नंबर 12 डाटा को मैनिपुलेट करिवा exponential square root means all of the above are performed ठीक है समस्त कोन करा जाई परिबो परफॉर्म करा जाई परिबो बिकॉज़ ALU होची अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जहां भी मैथमेटिकल फंक्शन को ALU ही अकम्प्लिश करिबो संपादन करिबो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 where are the central processing unit and memory located कोंतु CPU and आपनकर जो मेमोरी केउ थारे यार लोकेशन ता रहिछ CPU and memory रो लोकेशन रहउची मदरबोर्ड और यह को कहा जाउची प्रिंटेड सर्किट बोर्ड मध्ये कहा जाय जाको पीसीबी मध्ये कहा जाय व्हाट डज रिस्क स्टैंड्स फॉर इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर रे RISC रिस्क रो फुल फॉर्म कोन हो कोन क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन ए व्हिच राइट आंसर रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग ओके ऑप्शन ए हबो यार राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 which of the following is a characteristics of RISC architecture okay RISC architecture रो निम्नलिखित मध्यरु केमटा एक characteristics अटे is power efficiency
Option B is your right answer. Power efficiency. What is the primary function of the CPU? CPU माने तो से प्रोसेस करेगा टू प्रोसेस डाटा. ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर. CPU रो काम कौन डाटा को प्रोसेस करेगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन सी होगा यार राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 ट्राई करंतु. Which of the following units of measurement are used with computer system रे? Memory. ठीक अछि, गोटे memory unit हमें कहि परिबा. That is which of the following units of measurement are used in computer system? Question number 17 देखंतु. Bytes, kilobyte, megabyte, all of these is the right answer. Next question number 18 try करिबा. What is the function of the control unit in CPU? CPU रे CU रहिछि control unit, तो यार function कोन हबो कोन? What is the function of the control unit in a CPU? CPU रे थिबा control unit रो function होछि to generate करिवो control signal. Option C हेबो यार right answer. Okay, to generate control signal is the right answer. Next question number 19 try करिबा. Which of the following is not a type of cache memory? देखंतु जेतेबेले आपण कैसे मेमोरी कथा कहउछन यार लेवल 1 लेवल 2 एंड लेवल 3 पर्यंत हायरार्की रहिछि, बट लेवल 4 नाही. तो लेवल 4 कैसे गोटे कैसे मेमोरी रो पार्ट नुह. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 ट्राई करिबा. व्हाट डज beepling improve in a computer architecture? ट्राई करिबा क्वेश्चन नंबर 20. beepling improve माने कोन गोटे कंप्यूटर आर्किटेक्चर रे. दैट मींस instruction execution speed को कहजिबो. ऑप्शन बी होई जो राइट आंसर. instruction execution speed मन रखंतु. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21. which of the following is a type of bus in computer architecture? एड्रेस बस रहिछि, डाटा बस रहिछि एंड कंट्रोल बस रहिछि. एड्रेस ट्रांसपोर्ट करिवो, डाटा ट्रांसपोर्ट करिवो, ये सिग्नल ट्रांसपोर्ट करिवो. सो ऑप्शन डी ठीक हबो. ऑप्शन डी होई जो यार राइट आंसर. ठीक अछि, समस्त गोटी गोटी बस रो पार्ट अटंती. मेनली थ्री पार्ट रहिछि बस रो. क्वेश्चन नंबर 22. What is the purpose of interrupts in computer system? जेतेबेले किछि भी interrupts create हुए, then what is the purpose of interrupts in a computer system? To handle external events, that is called interrupts. Option C is the right answer. Okay, the purpose of interrupts in computer system means to handle external events. Option C is your right answer. Next question number 23 try करिबा. Which of the following is not a type of computer architecture based on instruction set को नहीं की? instruction रो set को नहीं की. देखंतु instruction set कथा कहै जाइछि ना, तो MICS टा हिजो आपन राइट आंसर. दैट इज कंप्यूटर आर्किटेक्चर रो कैटेगरी आसीबो नाही. नेक्स्ट MICS रो फुल फॉर्म कोन हबो आपन कमेंट सेक्शन रे जणात. ओके, MICS. नेक्स्ट जिबा क्वेश्चन नंबर 24. What does the term micro architecture refers to in a computer architecture? माइक्रो आर्किटेक्चर कोन? कंप्यूटर आर्किटेक्चर रे माइक्रो आर्किटेक्चर कोन हिजबो. दैट इज टू डिटेल्ड डिजाइन ऑफ ए CPU. ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर. नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेनिफिट ऑफ यूजिंग कैशे मेमोरी? जेतेबेले आपण कैशे मेमोरी को यूज करछन्ती देन तार एडवांटेज कोन रहिछि? कैशे मेमोरी को जेतेबेले यूज करिवे रिड्यूस मेमोरी एक्सेस टाइम, बिकॉज़ बहुत फास्ट ओके प्रोसेस करेबो, तो रिड्यूस करिवो मेमोरी रो एक्सेस टाइम. को ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर. कैशे मेमोरी को मन रखंतु. नेक्स्ट दिबा क्वेश्चन नंबर ओके सरिला वर्तमान हमर कंप्यूटर आर्किटेक्चर देन हार्डवेयर को नेकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करी. क्वेश्चन नंबर 1 पुनथरे हार्डवेयर को आरंभ करियो. ट्राई करंतु. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर? बहुत इजी क्वेश्चन. CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी इज यूज्ड फॉर टेम्पोररी स्टोरेज व्हाइल ए कंप्यूटर इज रनिंग? देखंतु शॉर्ट टर्म पई आपण स्टोरेज करिवे माने कोन हिजो, दैट इज सेटा हिजो आपनकर वोलेटाइल मेमोरी. इज RAM इज राइट आंसर. रैंडम एक्सेस मेमोरी को यूज करा दे शॉर्ट टाइम पई किछि भी स्टोर करिवा पई. व्हिच कंपोनेंट इज रिस्पांसिबल फॉर कन्वर्टिंग डिजिटल डाटा इनटू ए फॉर्म सुइटेबल फॉर डिस्प्ले ऑन ए मॉनिटर? ट्राई करंतु. व्हिच कंपोनेंट रिस्पांसिबल एथि पई आपनकर GPU. ओके, ग्राफिकल प्रोसेसर यूनिट इज राइट आंसर. ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर. क्लियर? No doubt, option C होगा यार right answer. Next is question number 4. Which of the following is an example of an input device? Input device: monitor output, printer output, speaker output. Keyboard is your input device. Okay, keyboard is your right answer. Next, try to question number 5.
What does BIOS stands for? कहतु आपनकर जदि ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हुए दैट इज कोन होची BIOS रो काम बुटिंग करेबो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम अटे ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होची आपनकर BIOS नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 which storage device use magnetic disk to store data magnetic disk को से यूज करूची डाटा को स्टोर करबा पई दैट इज आपनकर हार्ड डिस्क ड्राइव ऑप्शन बी होज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ प्रिंटर रो गोटे टाइप हेबो नाही आपनकर इंकजेट रहिछि लेजर रहिछि डॉट मैट्रिक्स रहिछि बट एलसीडी प्रिंटर सेमि किछ नाही ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 what type of connector is commonly used for connecting a keyboard to a computer कीबोर्ड को कंप्यूटर सहित कनेक्ट करा जिवो तेबे आपण कोन यूएसबी भी परिबो एचडीएमआई भी परिबो एंड ईजीए भी परिबो व्हाट टाइप ऑफ कनेक्टर इज कॉमनली यूज्ड फॉर कनेक्टिंग ए कीबोर्ड टू ए कंप्यूटर सॉरी एचडीएमआई हबन बिकॉज़ एटा आपण को विजुअल पई ओके एटा भी विजुअल पई इथरनेट रो भी हबन सो ऑप्शन ए होय राइट आंसर यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस यूएसबी पोर्ट और यूएसबी रो बस जरिया आपनकर कीबोर्ड को आपन कंप्यूटर सहित कनेक्ट करि परिबे ऑप्शन ए होइछ राइट आंसर बिकॉज़ कहि कोन एटी कीबोर्ड कथा कहै छै ऑप्शन ए ही हो यार राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करिबा ट्राई करंतु व्हिच कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर इज रिस्पांसिबल फॉर परफॉर्मिंग अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन माने तो एएलयू अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन एएलयू करिवो आपनकर एएलयू होइछ राइट आंसर ओके नेक्स्ट दिबा क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई करंतु क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी रिटेन्स डाटा इवन व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ माने कोन दैट इज नॉन वोलेटाइल देन कोन निम्नलिखित मध्यरु केउटा एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी अटे रोम इज रीड ओनली मेमोरी टाइप नॉन वोलेटाइल मेमोरी अटे ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस Which of the following is an external storage device? Storage device को था जाउछि hard disk drive is option C hard disk drive HDD is your right answer next try करिबा what does SSD stands for in computer hardware SSD रो फुल फॉर्म कोन हबो कोन SSD रो फुल फॉर्म कोन होइजिबो SSD रो फुल फॉर्म हेउछि solid state drive option A समस्त चूज करछन ऑप्शन ए हबो यार राइट आंसर सॉलिड स्टेट ड्राइव हबो यार राइट आंसर हेला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 जिबा which part of the computer system connects all other components together which part of the computer system connect करूची अन्य मान को एकाठी करिया पई which part of the computer हिजो मदरबोर्ड रे ही तो रहउची ना ठीक अछि मदरबोर्ड और जाकू प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कहै छै Next question. What is the primary function of the power supply unit in a computer? Primary function कौन है To provide power to all components. Option B is your right answer. Next question number 15. Which type of memory is faster but more expensive per gigabyte अनुसार more expensive मान तो SSD. ठीक है SSD ही solid state drive. Faster but more expensive. That's why अपन अगर HDD hard disk drive को use करा जाए Question number 16. What does a graphics card do in a computer system? Graphics card रो काम कोन कहंतु computer system. Graphic card रो काम होछि कोन process graphics and image में option B होइज right answer. Next question number 17. Which device is used to output sound from a computer? Output sound पई आपनकर speaker को यूज करा जाय ठीक अछि बट output device speaker sound पई यूज करा जाय Next question number 18 try करिवा What type of interface does a USB device use to connect to a computer? What type of interface? USB device. Try करंतु question number 18. बट ए कोन एटा serial interface को यूज करा जाउछि parallel serial नहीं तो USB serial interface. Next question number 19. Which component helps in cooling down the CPU? Heat sink method को ठीक है heat sink method is your right answer option B is your right answer heat and sink और fan को अपन यूज करंती क्लियर CPU को कूल करिया पे जेम अपन CPU fan को अपन व्यवहार करंती
Here, next is question number 20. What type of cable is typically used to connect a monitor to a computer? Okay, what type of cable is typically used to connect a monitor to a computer? Monitor माने कोन, that is output device. That means कोन, that is आपण visual को देखिए. Okay, तो visual में VGA ही परिबो और HDMI ही परिबो. HDMI को यूज करा जाए. ऑप्शन ए हो जो है राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 ट्राई करंतु. Which technology allows multiple device to connect wirelessly to a network? Which technology allow multiple device to connect wirelessly to a network? Wirelessly कथा को जाउ देखंतु. Wirelessly माने कोन हिजो आपनकर ब्लूटूथ हिजो. ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर. That is what a PAN area, what a personal area network under SD. What does RAID stands for in data storage technology? RAID रो full form कोन हबो कोंतु. RAID रो full form कोन हिजो कहबा. What does RAID stands for in data storage technology रे? Which option? RAID होची आपनकर redundant array of independent disks. Redundant array of independent disks. Option B हो जाएगा right answer. ठीक है जी, option B. Next question number 23. Which type of RAM is used in modern computer or main memory ପାଇଁ? क्यों प्रकार RAM को यूज करा जाउची random access memory रे? DRAM. ठीक है, dynamic random access memory हो जाएगा right answer. Next one to, what is the primary purpose of an optical drive in a computer system? What is the primary purpose of an optical drive ro gote primary purpose कोन हे परिबो? To read and write data on CD or DVD. Read and write ପାଇଁ यूज करा जाय optical drive. Next question number 25 try करिवा. Which component is essential for connecting to the internet in a desktop computer? Which component is essential for connecting to the internet in a desktop computer? Network interface card. NIC रो गोटे कार्ड to most to connect कोन कर परिबे आपण इंटरनेट को आपण यूज करि परिबे. NIC कार्ड को यूज करिया दरकार. आपण मदरबोर्ड रे NIC कार्ड जदी आपण इंस्टॉल करछन मींस कोन सेटअप करछन देन आपण डेस्कटॉप कंप्यूटर रे इंटरनेट को कनेक्ट करि परिबे. क्लियर? एथिला कंप्यूटर हार्डवेयर. नेक्स्ट दिबा कंप्यूटर मेमोरी रो 25 क्वेश्चंस देखिबा. ट्राई करंतु. व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ मेमोरी इन कंप्यूटर सिस्टम रे? स्मॉलेस्ट एंटिटी कोन हिजबो? ब्लॉक, सेल, इंस्टेंस ना सेट? सेल हिजबो. ऑप्शन B is your right answer. Next, which type of memory is volatile and lost data when power is turned off? It means कोन आपनकर डाटा लॉस्ट करिवो जदी पावर कट करि दिया जिवो. That is कोन volatile. Random access memory is option B is your right answer. Next, what is the primary function of cache memory? Cache memory ro primary function कोन हबो कोंतु? Cache memory रो primary function होची to provide fast access to frequently used data. Option B is your right answer. Next, which of the following is an example of non-volatile memory? Non-volatile माने not forget, data को retain करिवो ROM, read only memory मन रखो. Next, what does DRAM stands for? DRAM रो full form कोन हेबो? DRAM रो full form होची dynamic random access memory. Option A is your right answer. Which type of memory needs periodic refreshing to maintain store data? Periodic refreshing दरकार. ठीक अछि, डाटा को मेंटेन करिया पई, that is dynamic RAM. DRAM is your right answer. Option B. Here right answer option C, D. Okay, option D here right answer. Next question number 7 try करंतु. What is the purpose of virtual memory? Virtual memory रो purpose कोन हबो कोंतु? What is the purpose of virtual memory? That is to increase RAM capacity using hard disk space. Option A is your right answer. Virtually आपण यूज करि परिबे. Which of the following is not a type of secondary memory? Secondary memory देखंतु आपनकर. Okay, easily जानि होची question number 8 option C हो जो. Random access memory टा गोटे secondary memory होता है primary memory. Next question number 9. What does ROM stands for? ROM रो full form कोन? Read only memory. Option A हो जो right answer. Read only memory. Next question number 10 जिबा. Which memory type is faster but more expensive than DRAM? DRAM अपेक्षा बहुत फास्ट किंतु अधिक एक्सपेंसिव, अधिक खर्च बहुल होते. SRAM static RAM टा मन रखंतु. Next question number 11 try करंतु. What is the primary memory of a personal computer composed of what a personal computer रो primary memory टा कोन हे परिबो? Primary memory टा एथरे आपनकर RAM and ROM को यूज करा जाय. Option C हो जो right answer. Next question number 12. Where
आर बूट सेक्टर फाइल टाइपिकली स्टोर्ड बूट आपनकर होची कंप्यूटर जो रन करूची दैट इज बूटिंग होची तो बूट सेक्टर फाइल टा स्टोर हे की रहिबो आपनकर रोम रे ऑप्शन बी हो जबो राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू 1024 बाइट्स 1024 बाइट्स रो अर्थ होची गोटे किलोबाइट ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 ट्राई करियो व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी इज यूज्ड इन कैसे मेमोरी रे यूज करा जाउची आपनकर very very important question number 15 परीक्षा आसी पारे what type of memory is used in कैसे memory मने रखंतु 30 ग्राम को यूज करा जाए बहुत एक्सपेंसिव नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 what is the primary function of register रो प्राइमरी फंक्शन कोन हो कोंतु register रो प्राइमरी फंक्शन कोन होची register ता CPU मध्ये थाउची माने टू प्रोसेस डाटा इज राइट आंसर ऑप्शन ई हो जबो हेरो राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 which type of memory is used for storing data temporarily while a computer is running ठीक अछि देखो तो डाटा को शॉर्ट टर्म पाई आपण जदी स्टोर करछन दैट इज वन भला टाइप ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर RAM ही होयर राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 ट्राई करबा व्हाट डज SDRAM स्टैंड्स फॉर SDRAM रो फुल फॉर्म कोन हो कोन SDRAM रो फुल फॉर्म कोन हो जिवो क्वेश्चन नंबर 18 सिग्नोरोस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 जिबा which of the following is not a characteristics of कैसे मेमोरी गोटे कैसे मेमोरी रो कैरेक्टरिस्टिक्स होबो नाही निम्नलिखित मध्यरु केउटा देखंतु एथिरे तो फास्ट एक्सेस ही परिबो एक्सपेंसिव ही परिबो किंतु हाई कैपेसिटी रहबन स्टोरेज कैपेसिटी माने कोन बहुत कम अटे यार ऑप्शन बी यार गोटे कैरेक्टरिस्टिक्स होबो नाही नेक्स्ट व्हाट इज द पर्पस ऑफ फ्लैश मेमोरी रो पर्पस कोन होबो कोंतु फ्लैश मेमोरी रो पर्पस होची टू स्टोर डाटा इन ए नॉन वोलेटाइल मैनर रे माने कोन होची डाटा को से रिटेन करिवो फ्लैश मेमोरी टा which type of memory is used in USB drives रे USB drives रे केउ प्रकार मेमोरी को यूज करा जाउची USB drive रे आपनकर फ्लैश मेमोरी को यूज करा जाय फ्लैश मेमोरी नेक्स्ट दिबा क्वेश्चन नंबर 22 ट्राई करंतु व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन DRAM एंड SRAM एंड SRAM भितर थिबा प्राइमरी डिफरेंस कोन हे परिबो देखंतु SRAM इज फास्टर देन DRAM SRAM ता DRAM अपेक्षा कोन टिके फास्टर टे ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ टर्शियरी स्टोरेज अटे टर्शियरी स्टोरेज हे परिबो निम्नलिखित मध्यरु केउटा एक टर्शियरी स्टोरेज हे परिबो क्वेश्चन नंबर 23 दैट इज मैग्नेटिक टेप ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन जेबा क्वेश्चन नंबर 24 व्हाट डज PROM स्टैंड्स फॉर PROM रो फुल फॉर्म कोन हो कोंतु PROM रो फुल फॉर्म कोन हिजबो दैट इज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 which of the following is not a type of non volatile memory निम्नलिखित मध्यरु केउटा एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी देखंतु ROM नॉन गोटे ही परिबो फ्लैश मेमोरी भी परिबो हार्ड डिस्क ड्राइव भी परिबो दैट इज RAM इज गोटे वोलेटाइल सो RAM हेउचे रैंडम एक्सेस मेमोरी हेउचे एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी हेबो नाही ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर नेक्स्ट जिबा लास्ट पार्ट रे आसी पहुंचे जंदी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रो पुनी 25 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करबा ट्राई करंतु क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स ए यूजर फ्रेंडली इंटरफेस फॉर interacting with the computer's hardware and applications software तो कोन जानि छथि ना दैट इज कोन सेट ऑफ प्रोग्राम लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर इंटेंजिबल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर कोन हार्डवेयर को आपण कोन कहि परिबे फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर कहि परिबे और टेंजिबल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर कहि परिबे मींस यू कैन टच एंड सी बट इन केस ऑफ सॉफ्टवेयर यू कैन सी ओनली बट यू कांट टच राइट ट्राई करिबा क्वेश्चन नंबर 1 व्हिच ऑप्शन इज द राइट आंसर व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करूची ना कोन प्रोवाइड करूची यूजर फ्रेंडली इंटरफेस or interacting with the computer's hardware and applications तो सेटा गोटे केउ प्रकार रो सॉफ्टवेयर हे परिबो दैट इज कोन हे परिबो ऑपरेटिंग सिस्टम ता गोटे सिस्टम सॉफ्टवेयर हे परिबो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर हार्डवेयर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू ट्राई करंतु क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज कोन सॉफ्टवेयर हे तो कहबो सॉफ्टवेयर हे जो हेरा राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 what is the purpose of device drivers in a system software but system software device drivers of purpose कोन device रो driver जेमि आपण प्रिंटर इंस्टॉल करिवे तो प्रिंटर रिलेटेड गोटे ड्राइवर इंस्टॉल हे आपनकर प्रिंटर ता फंक्शन करियो देन कोन तो व्हिच ऑप्शन हे जिवो देखंतु टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन विथ हार्डवेयर डिवाइस ओके जेमिति आपण एग्जांपल दिली प्रिंटर जदि आपण इंस्टॉल करछथि प्रिंटर रो गोटे ड्राइवर आपण को ऑपरेटिंग सिस्टम रे लोड करिवार अछि सो दैट प्रिंटर काम करिवो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 व्हिच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर
includes applications like Microsoft Word and Adobe Photo. Application software ही करी ठीक अछि गोटे यूजर रो कोन गोटे प्रोडक्टिविटी सेंस यूजर यूटिलिटी सेंस ऑप्शन डी ही जो राइट आंसर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दुई भाग रे गोटे सिस्टम अन्यटी एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड एडोबी फोटोशॉप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही परिबो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होचे आपनकर एंटीवायरस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एज पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जहां आपनकर सिस्टम सॉफ्टवेयर रो पार्ट देखंतु यूटिलिटी सॉफ्टवेयर टा गोटे मेंटेनेंस पई यूज करा जाय गोटे मेंटेनेंस पर्पस रे राइट तो कोन हे करियो वायरस को स्कैनिंग करबा सेंस ऑप्शन बी होय जो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करबा which type of software is responsible for managing and organizing data in a structured manner database management system option B organized and structured way रे data को store करा जाय परिबो क्वेश्चन नंबर 7 what is the primary purpose of a web browser as a application software primary purpose of कोन कोन गोटे web browser होची गोटे application software अटे that is कोन to facilitate internet communication and access web content like अपन वेबसाइट को एक्सेस करि परिबे वेब ब्राउज़र जरिया रे गूगल क्रोम हेउचे एक वेब ब्राउज़र एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 8 व्हिच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज रिस्पांसिबल फॉर क्रिएटिंग एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट देखंतु डॉक्यूमेंट को क्रिएट करबा एडिट करबा एंड फॉर्मेट करबा पई आपण वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को यूज करि परिबे और वर्ड प्रोसेसिंग इज राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 व्हिच इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर अपडेट्स एंड पैचेस व्हिच इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर रो प्राइमरी फंक्शन कोन हे परिबो फिक्सिंग सॉफ्टवेयर ठीक अछि फिक्सिंग सॉफ्टवेयर vulnerabilities and improving stability by option C होय जो है राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई करिबा which of the following is an example of popular open source operating system open source माने कोन सोर्स कोड तार फ्रीली अवेलेबल रहछि but you don't need to buy source code that is open source तो केउटा गोटे लोकप्रिय ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम हे परिबो क्वेश्चन नंबर 10 लिनक्स इज द राइट आंसर एंड्रॉइड तो हे परिबो बट एंड्रॉइड टा अपन स्मार्टफोन केस रे एंड्रॉइड भी तो ओपन सोर्स ना ओके जदि हम कंप्यूटर क्षेत्र रे देखिबा लिनक्स इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बट स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन रो प्राइमरी फंक्शन कोन स्प्रेडशीट जेमि आपनकर एक्सेल कोन हे परिबो प्राइमरी फंक्शन एनालाइजिंग एंड मैनिपुलेटिंग न्यूमेरिकल डाटा option C is your right answer next which type of software is responsible for managing and controlling hardware peripherals such as printer and scanners which type of software is device driver okay it means कोन जेमिति आपण printer scanner जदि आपण कंप्यूटर रे कनेक्ट करिवे so that आपण printer and scanner रो गोटे ड्राइवर को इंस्टॉल करिवे आपनकर सिस्टम सॉफ्टवेयर मींस ऑपरेटिंग सिस्टम रे कंप्यूटर रे what is the primary function of email client software रो primary function कोन हे परिबो कोंतु primary function होजे sending receiving and managing email messages next question number 14 try करिवा which of the following is an example of an operating system used on apple रे आपनकर यूज करा जाउची that is mac operating system option C is your right answer what is the primary function of a compiler in software development रे again असला ओके पुनी से रिपीट अछि गोटे कंपाइलर रो काम होची ट्रांसलेट करिवो हाई लेवल कोड को मशीन कोड रे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 ट्राई करंतु which type of software is used to manage and control the hardware components and allow interaction between the hardware and other software question number 16 system software ही अब राइट आंसर ओनली आपन को लैंग्वेज रे प्रोवाइड करा देछि ट्राई करंतु what is the purpose of antivirus software रो पर्पस कोन कोन antivirus software रो पर्पस कोन हिजो क्वेश्चन नंबर 17 to protect a computer system from malicious software and threats विंडोज द्वारा प्रोवाइड करा जाउतबा गोटे बाय डिफॉल्ट एंटीवायरस होचे विंडोज रो डिफेंडर माने रखंतु विंडोज 10 वर्जन रे प्रोवाइड करा जाय नेक्स्ट which type of software includes tools for tasks like virus scanning and disk cleanup by यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होजे आपनर कोन गोटे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रो कैटेगरी एंड ए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर टा गोटे सिस्टम सॉफ्टवेयर रो ही गोटे पार्ट होते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 ट्राई करबा व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रो प्राइमरी फंक्शन कोन हिजबो टू मैनेज एंड ऑर्गेनाइज डाटा इन ए स्ट्रक्चर्ड मैनर रे ऑप्शन बी होइबो राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर हबो नाही देखंतु माने सॉफ्टवेयर गोटे टाइप नो सॉफ्टवेयर को दुई भाग रे विभक्त करा जाय सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होची यार एक पार्ट
बट आपनकर ड्राइवर सॉफ्टवेयर टा मध्ये कोन से सिस्टम सॉफ्टवेयर अंडर ही आसीबो ऑप्शन डी ड्राइवर सॉफ्टवेयर गोटे सिस्टम बा गोटे सॉफ्टवेयर रो पार्ट हेबो नाही नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए वेब ऑथरिंग टूल वेब ऑथरिंग टूल रो गोटे प्राइमरी फंक्शन कोन हे परिबो कोन वेब ऑथरिंग टूल रो प्राइमरी फंक्शन होजी टू क्रिएट एंड एडिट वेब पेज में ठीक अछि दैट इज वेब को डेवलपमेंट करिया which type of software is used for creating animated video आपण क्रिएट करिया पई प्रोटागन को यूज करि परिबे ठीक अछि प्रोटागन इज योर राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करंतु क्वेश्चन नंबर 23 व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए माइंड मैपिंग टूल लाइक माइंड मेस्टर रो प्राइमरी फंक्शन कोन हे परिबो माइंड मेस्टर गोटे माइंड मैपिंग टूल यार प्राइमरी फंक्शन हेउची to understand and make connection between concept, idea and information. Option B is your right answer. Question number 24 try kariyo. Which platform is used for version control and collaborative software development? It means software को development करिया पई केउ platform को आपण यूज करि परिबे GitHub को आपण यूज करि परिबे ठीक है software को develop करिया पई. Then आज रो last question try करंतु for you. What is the primary function of मेंटीमीटर रो प्राइमरी फंक्शन कोन हो कोन मेंटीमीटर रो प्राइमरी फंक्शन कोन हिजो देखंतु मेंटीमीटर होजे गोटे प्रेजेंटर मेंटीमीटर कोन गोटे प्रेजेंटर लाइक जेमिति आपण घर टेलीग्राम रे क्विज कंडक्ट करा जाय लाइक दैट कोन करिवो टू क्रिएट प्री एंड पोस्ट सेशन पोल्स पई आपण घर मेंटीमीटर को यूज करा जाय ठीक अछि गोटे इंटरैक्टिव प्रेजेंटर सिंपली बुझंतु जेमिति आपण क्विज को कंडक्ट करा जाय टेलीग्राम रे like that with mentimeter साहाय्य यार प्राइमरी फंक्शन is to create pre and post session polls is your right answer option C is your right answer okay